Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 3. The name of the paper is Morphology and Syntax. The chapter is Morphology, and in morphology we will do free morphemes and bound morphemes. We have already discussed this uh, topic, free morphemes and bound morphemes, if you remember, in lecture number 14 of Introduction to Linguistics, which was actually for BA second semester. This was the topic, free and bound morpheme. So you can do it from here too. But of course, there is a little difference here, and that would be interesting and important to remember. This lecture is specifically for the students of BS English third semester GDC PABI, and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. As I said, we have already discussed this topic, and it is the same, at least in this area. It is just like Yol, and he defines free morpheme O'Grady as that morpheme that can be a word by itself. Um, a morpheme acting as a word is referred to as free morpheme. It is free because it can stand alone on its own, and it doesn't need anything for its meaning to give. And bound morpheme is the one which must be attached to another element in order to give its meaning. The example is simple. A boy, for example, is a free morpheme. It is a free morpheme because it can stand as a word on its own without any attachment with it. So it is therefore a free morpheme. But taking the plural s, this one, it is not a free morpheme, it is a bound morpheme because it cannot be used as a word by itself, and it has to be attached in order to give its meaning. So this was something which we have already done. However, this is the new item for you, and you should note it and add it with the free and bound morpheme you have done from Yule. And this is O'Grady's book, page number 102. You can open the book I have shared with you in the group and look at this page. You can take the printouts as well for in order to use it as your notes. There are some morphemes in English which are free in English, but if they are looked at in other languages, the same morphemes are bound in other languages. So there are some morphemes which are free in English, but which are bound in other languages. We will take, for example, the body parts in Athabaskan language, which is spoken in the Northwest Territories of Canada. And the body parts in that language, which is called hair language, um, uh, are not actually free morphemes, which in English, of course, are free morphemes. Hat, for example, is a free morpheme. If you take my hat, these are two separate morphemes, both of them free morphemes because they connect as words on their own. But in hair language or in Athabaskan language, which is spoken in Canada, this the name of the language is hair language. In this language, a head this cannot come along as the word fire. It has to be attached with the possessor, the one who possesses, for example, is here my, and Sephai means my head. And you can see that these two separate morphemes are not separate in it. Phi, which means head in English, actually this asterisks tell us
tells us that this is not a free morpheme, it is a bound morpheme, and therefore wrong to say phi. You have to attach the possessor with it, and as a result it becomes bound. So there are some morphemes which are free in English but which are bound in other languages, and the example is the Athabaskan language, here language spoken in Canada. And in this language the body parts are not free morphemes as they are in English. um, for example, a head in English is a free morpheme, but phi is not a free morpheme. It has to be attached with the possessor, the one who possesses the head. For example, my head or belly, bay is not free, and you have to attach some possessor with it, your belly, for example, nearby, and as a result, body parts are not free morphemes in hair language. ये उर्दू में भी सुन लें. फ्री मार्फीम्स और बाउंड मार्फीम तो हम कर चुके हैं योल से. वहाँ से आप लेक्चर नंबर 14 था हमारा, फ्री और बाउंड मार्फीम, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं. और फ्री मार्फीम के बारे में हमने यही कहा था कि वो खुद से एक लफ्ज़ बना सकते हैं और इसके लिए किसी और की चीज़ के साथ अटैचमेंट ज़रूरी नहीं है. बाउंड मार्फीम जो है ये किसी और एलिमेंट के साथ अटैच होता है. बॉय मसलन फ्री मार्फीम है क्योंकि ये खुद से एक लफ्ज़ बना सकता है. एस जो प्लूरल के लिए आता है ये खुद से नहीं यूज़ हो सकता, तो ये बाउंड मार्फीम है. फिर इसमें हमने ये पढ़ा कि बाज़ मार्फीम इंग्लिश में तो फ्री हैं लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस में ये बाउंड मार्फीम्स हैं. मसलन अगर हम हेयर लैंग्वेज ले लें, ये कनाडा में बोली जाती है, इसको अथाबस्कन लैंग्वेज कहते हैं. तो इसमें फाई जिसका मतलब हेड है अलग से नहीं आता, इसके साथ रखने वाला पोजेसर जिसको कहते हैं वो ज़रूरी है. मसलन माय पोजेसर है तो ये सेफाई, ये इन दो का मजमुआ है, जबकि इंग्लिश में ये दोनों अलग अलग मार्फीम्स हैं और फ्री मार्फीम्स हैं. तो ये बात हुई इसकी कि बाज़ मार्फीम इंग्लिश में फ्री हैं, दूसरे लैंग्वेजेस में फ्री नहीं है. इसको पढ़ भी लेता हूँ, आपके लिए आसानी होगी. कॉन्सेप्ट्स दैट आर एक्सप्रेस्ड बाय फ्री मार्फीम्स इन इंग्लिश. बाज़ बातें, कॉन्सेप्ट्स जो कि इंग्लिश में फ्री मार्फीम्स के तौर पे आती हैं, डू नॉट नेसेसरली हैव द सेम स्टेटस. उनका यही स्टेटस नहीं होता फ्री मार्फीम का इन अदर लैंग्वेजेस में, दूसरी लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल मसलन इन हेयर लैंग्वेज, अथाबस्कन लैंग्वेज है, स्पोकन इन कनाडा's नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में बोला जाता है. मार्फीम्स दैट इंडिकेट बॉडी पार्ट्स, वो मार्फीम जो जिस्म के हिस्सों को जाहिर करते हैं, मस्ट ऑलवेज बी अटैच टू ए मार्फीम. इसको हमेशा किसी मार्फीम के साथ अटैच करना पड़ता है, ऐसा मार्फीम डेजिग्नेटिंग अ पोजेसर, जो किसी पोजेसर को जाहिर करे, रखने वाले को जाहिर करे. एज शोन इन टेबल नंबर 4.2. दी डायक्रेटिक, ये जो डैश है, मार्क्स ए हाई टोन. इसको हाई टोन में पढ़ा जाएगा. तो बात यह है कि ये हमने पढ़ लिया है. हेड इंग्लिश में तो फ्री है लेकिन हेयर लैंग्वेज फाई जिसका मतलब हेड है फ्री नहीं है. इसको माय या यू या योर या हिज या हर के साथ लगाना पड़ता है. जैसे सिफाई का मतलब है माय हेड, और यूं ये फ्री मार्फीम्स नहीं. इन इंग्लिश ऑफ कोर्स बॉडी पार्ट्स नेम्स, बॉडी पार्ट्स के नाम जो हैं आर फ्री मार्फीम्स, ये फ्री हैं एंड डू नॉट हैव टू बी अटैच्ड टू अनदर एलिमेंट, और इसको किसी और एलिमेंट के साथ अटैच नहीं करना पड़ता. इसके बरक्स बाज मार्फीम्स ऐसे हैं जो कि बाउंड हैं इंग्लिश में और फ्री हैं दूसरी लैंग्वेजेस में. तो ये इसका बिल्कुल उलट है कि ये इंग्लिश में फ्री है, दूसरे में बाउंड है. ये इंग्लिश में बाउंड है, दूसरों में फ्री है. मसलन ये जो ईडी है पास्ट के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जैसे वास्ट द कार में वास्ट में ईडी है,
تو یہ ed باؤنڈ مارفیم ہے، آپ کو پتا ہے، یہ الگ سے نہیں آ سکتا. لیکن اگر ہم تھائی لینگویج کو لے لیں، اس میں یہی مارفیم جو ہے اس طرح لکھا جاتا ہے لو، اور یہ ایک سیپریٹ مارفیم ہے اور ایک فری مارفیم ہے. تو ای ڈی انگلش میں باؤنڈ ہے اور ای ڈی یعنی پاسٹ تھائی لینگویج میں یہ فری ہے. مثلا یہ تھائی لینگویج ہے اور تھائی لینگویج میں یہ الفاظ ہیں. بون شخص کا نام ہے، تان ایٹ کھانے کو کہتے ہیں، اور خاؤ یا کھاؤ رائس کو کہتے ہیں، اور لو یہ تلفظ جو بھی ہے یہ ای ڈی ہے، اصل میں پاسٹ ہے لیکن الگ سے آیا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں ایٹ اور پاسٹ، تو ایٹ اور پاسٹ کو تو انگلش میں ایٹ کہتے ہیں، تو یہ اگر اس کے ساتھ ملا لیں تو یہ بون ایٹ رائس. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 1 2 3 4 مارفیمز ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں تو 1 2 3 میں تبدیل ہو گیا ہے اور یہ اپنے اندر ای ڈی چھپائے ہوئے ہے. تو یہ اصل میں 8 ہے، 8 بھی 2 مارفیمز کا مجموعہ ہے جو کہ شو نہیں ہو رہا ہے. تو یوں ہم اس کے برعکس ہم نے پڑھ لیا ہے. میں اس کو ریڈ بھی کر دیتا ہوں. Conversely اس کے برعکس there are also some bound forms in English. کچھ انگلش میں فارمز ہیں جو باؤنڈ ہیں whose counterparts in other languages are free، جس کے متعلقہ الفاظ دوسرے لینگویجز میں فری ہیں. The notion past or completed، یہ جو آئیڈیا ہے پاسٹ اور کمپلیٹڈ کا is expressed by the bound morpheme ed in English. اس کو ed سے ظاہر کرتے ہیں as in I washed the car، اور I washed car اس میں ed ہے. But by the free morpheme لو in تھائی لینگویج میں یہ لو لفظ سے ظاہر ہوتا ہے. As the following sentence shows، مزید جملے میں دیکھیں لو can even be separated from the verb، لو کو آپ verb سے سپریٹ کر سکتے ہیں by an intervening word، اس میں بیچ میں بھی ایک ورڈ آتا ہے، یعنی یہ لفظ ان دونوں کے بیچ میں ہے. ٹون از ناٹ مارکڈ ہیئر، انٹونیشن وغیرہ اس میں نہیں ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جاننے کی. تو یہ میں نے آپ پہلے سے ہی بتا دی، ٹرانسلیٹ ہو گیا ہے. Summarizing this now، free morphemes are those which can be words by itself، that is a free morpheme. Bound morpheme is always attached with another word in order to give some meaning, another word or another element. There are some morphemes which are free in English but bound in other languages. The example is the body parts. They are free in English but they are bound in hair language. There are some morphemes which are bound in English but free in other languages. The example is the ed morpheme for past, which is bound morpheme in English but which is free morpheme in Thai language. So that was all. Thank you and good luck.